Hey YouTube fam, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. हमने लास्ट टाइम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे थे. इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशंस हम लोग ने देखा था हाउ टू अप्रोच अ पर्टिकुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड हम लोग ने कुछ बेसिक चीजें भी देखी थी विच विल सर्व टू सॉल्व दोस MCQs in a better way. This particular video lecture is a continuation of that series. आज भी हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग MCQs देखने वाले हैं and also we will find some important concepts which will help us to solve those MCQs in a better way. So without wasting any time, let's start with our first MCQ of this particular video lecture. A sympathomimetic amine that acts exclusively by releasing noradrenaline from the nerve ending is. Our options are ephedrine, dopamine, isoprenaline and tyramine. Now ये particular question को solve करने के लिए we need to first understand कि ये question में बोला क्या गया है and what we need to find. In this particular question we need to find ऐसा drug which releases noradrenaline from the nerve ending. So we saw कि in our basic division of sympathomimetic drugs, हमने sympathomimetic drugs को दो categorization में divide किया था. One was based on the structure and the second one was based on the mechanism of action. Now structure के basis पे we classified our sympathomimetic drugs into two main classification. कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं which has catechol ring or we can say catechol nucleus and ऐसे compounds are known as catechol amines. कुछ ऐसे components होते हैं which do not contain this catechol ring or catechol nucleus and ऐसे components को हम लोग बोलते हैं non-catechol amine. This particular classification was based on the structure यानी कि केमिकल के बेसिस पे हम लोग ने इसको क्लासिफाई किया था. The second classification is based on the mechanism of action. Now based on the mechanism of action हमारे पास तीन मेन क्लासिफिकेशन है. The very first one is a directly acting sympathomimetic drugs. Now directly acting sympathomimetic drugs क्या करते हैं? ये डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं and directly it will stimulate our adrenergic receptor. Second classification है that is indirectly acting sympathomimetic drug. ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्टली रिसेप्टर को तो नहीं बाइंड करते but they will increase the release of noradrenaline from the nerve ending and ultimately जो साइनेप्स में नॉरएपिनेफ्रिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा and ultimately जो हमारा sympathetic activity है that will increase. The third classification is mixed acting sympathomimetic drugs and ये ऐसे drugs होते हैं which can directly stimulate our adrenergic receptor and also in some amount it can release the norepinephrine from the nerve ending. So ये particular question में we need to find ऐसा ड्रग विच इज एक्टिंग इनडायरेक्टली ऑन अवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्योंकि यहां पे लिखा है एक्सक्लूसिवली बाय रिलीजिंग नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम द नर्व एंडिंग. सो हम लोग ने इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को दो हिसाब से क्लासिफाई किया था. द वेरी फर्स्ट वन इज रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड द सेकंड वन इज एक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट. In the action by displacement, we mainly saw four important drugs. The very first one is amphetamines, methylphenidate, modafinil and tyramine. Now, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें से if you can find such kind of options, let's see. In this particular question, we have a option D that is tyramine and ये जो tyramine है that is indirectly acting sympathomimetic drug which is exclusively releasing noradrenaline from the adrenergic nerve ending. So in this particular question option D is correct. But wait,
अगर आपको याद नहीं आया कि टायरामिन इज एक्टिंग ऑन अवर एड्रीनर्जिक सिस्टम बाय इनडायरेक्टली रिलीजिंग द नॉरएपिनेफ्रिन, तो उस केस में हम क्या करेंगे? द आंसर इज वेरी सिंपल. ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, just classify the drugs as per its mechanism of action. Let's see. Now, if I say option A, that is ephedrine, if you can recollect, ये जो ephedrine है, that is a mixed acting sympathomimetic drug, and mixed acting sympathomimetic drug हमें ये क्वेश्चन में नहीं चाहिए. Now, आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग भी थोड़े अमाउंट में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं. सो व्हाई इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एफिड्रिन इज नॉट द ऑप्शन? बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज प्योरली रिटन एक्सक्लूसिवली. एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है प्योरली दिस पर्टिकुलर ड्रग is acting by releasing noradrenaline from the nerve ending, and ऐसे जो drugs होते हैं which purely act, they are known as indirectly acting sympathomimetic drug. So ephedrine is a mixed acting sympathomimetic drug which is not exclusively releasing noradrenaline from the nerve ending. So ephedrine चला गया, option A has been eliminated. Let's move on to the second option, that is dopamine. Dopamine can also be considered as mixed acting sympathomimetic drug. So option B भी eliminate हो गया. Isoprenaline. Isoprenaline हमें ये पता है कि it is directly acting sympathomimetic drug which is having its main action on beta 1 and beta 2 adrenergic receptor. So option C भी eliminate हो गया. We are left with only one option, and that is our correct option. And this is a very good technique कि अगर आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी अगर नहीं आती या फिर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, just simply try to eliminate the options. It will be very easy to find the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following effect is related to direct beta 1 adrenergic receptor stimulation? Now ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं where the question is about the action, जब हम एक पर्टिकुलर रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करते हैं, what will be its effect? So ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए just simply read the options and options को देख के try to link that particular option with a particular adrenergic receptor. Let's see. Our option A is bronchodilation. But हमें ये पता है कि bronchodilation के लिए जो adrenergic receptor होता है that is beta 2 adrenergic receptor. But हमें क्वेश्चन में beta 1 की एक्शन चाहिए. यहाँ पे bronchodilation is with the help of beta 2 adrenergic receptor. So option A is eliminated. Let's move on to our option number B, that is vasodilatation. Vasodilatation is also a phenomenon of beta 2 adrenergic receptor, but हमें क्वेश्चन में beta 1 चाहिए, so option B is also eliminated. Tachycardia. अगर tachycardia है, that means it is something related to our human heart, and our human heart is having beta 1 adrenergic receptor. हमने previously डिस्कस किया था कि जो हार्ट पे हमारा बीटा 1 adrenergic receptor होते हैं, they are mainly present on our sinoatrial node, they are present on our atrioventricular node, and also they are present on our ventricles. So जब हम बीटा 1 adrenergic receptor sinoatrial node पे stimulate करते हैं, it will increase our heart rate, and heart rate increase को हम एक biologically एक proper word देते हैं, and that is known as tachycardia. So in this particular case, tachycardia is related with beta 1 adrenergic receptor action.
So our option C is correct. Now let's see कि हमने कुछ important ये टर्म्स देखे थे रिगार्डिंग द ह्यूमन हार्ट. बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अगर हम साइनोएट्रियल नोड वाला स्टिम्युलेट करते हैं, इट इंक्रीज द हार्ट रेट, एंड ये पर्टिकुलर इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट. If the conduction through the atrioventricular node is increased, we call this particular effect as positive dromotropic effect. अगर हमारा contractility of ventricle increase हो रहा है, we call that particular effect as inotropic effect. Now ये जो बीटा 1 होते हैं, they are also present on our JG cells in the kidney. एंड जब भी हम ये जेजे सेल्स इन द किडनी पे बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करते हैं, इट विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ रेनिन. एंड ये पर्टिकुलर सारे के सारे जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं, यू नीड टू बी वेरी क्लिस्टर क्लियर एंड ऑल्सो रिमेंबर द लोकेशन ऑफ बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ऑन द किडनी, दैट इज जेजे सेल्स ऑन द किडनी. Moving on to our next particular phenomenon, we need to understand कि ये जो table है, it is one of the most important table in the system of drugs acting on autonomic nervous system. So first we will discuss this particular table. हमने ये table को कैसे बनाया है वो हम discuss करेंगे, and इस particular table के base ऊपर हम कुछ questions लेंगे. So let's first try to understand कि ये हम लोग ने टेबल बनाया कैसे था. We had mainly 3 important drugs. The very first one was adrenaline, the second one was noradrenaline, and the third one was isoprenaline. हमने ये सारे के सारे ड्रग्स को मेनली 2 इसमें क्लासिफाई किया है, यानी कि इफेक्ट ऑफ ऑल दिस 3 पर्टिकुलर ड्रग्स on our blood pressure and the effect of all these 3 drugs on our heart rate. But उससे पहले let's first revise the adrenergic receptor जिस पे ये ड्रग्स काम करते हैं. So we know कि ये जो adrenaline होता है, it is working on our alpha 1 adrenergic receptor, alpha 2 adrenergic receptor, beta 1 adrenergic receptor, and also it is working on our beta 2 adrenergic receptor. Noradrenaline is mainly working on 3 main adrenergic receptor. They are alpha 1 adrenergic receptor, alpha 2 adrenergic receptor, and we have beta 1 adrenergic receptor. Isoprenaline is having its main action on our beta 1 adrenergic receptor and beta 2 adrenergic receptor. Now let's first come to our blood pressure. Now जैसे ही हम blood pressure की बात करते हैं, immediately it should strike कि blood pressure में we have 2 main components. The very first one is systolic blood pressure and the second one is diastolic blood pressure. In our basic understanding of blood pressure, हमने ये डिस्कस किया था कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन या फिर इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ अवर ह्यूमन हार्ट. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑन द अदर हैंड इज मेनली फोकस्ड ऑन total peripheral resistance. Let's first talk about the systolic blood pressure. Now जैसा कि मैंने बोला कि ये जो systolic blood pressure होता है, that mainly depends upon the contractility of the human heart, and we know कि human heart पे we have beta 1 adrenergic receptor. So इन तीनों ड्रग्स में से जो भी ड्रग बीटा 1 adrenergic receptor को स्टिम्युलेट करेगी, it will increase our systolic blood pressure. So see, adrenaline के पास beta 1 है, so this particular adrenaline by working on beta 1 adrenergic receptor can increase our systolic blood pressure. So यहाँ पे we see an upward arrow.
Noradrenaline is also having beta 1 action. So once again upward arrow. Isoprenaline is also having beta 1 action. So once again we see an upward arrow. Now talking about the diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure mainly depends upon total peripheral resistance. Now ये जो total peripheral resistance होता है, that is a phenomenon of blood vessel, and blood vessel में we have two main adrenergic receptor. The very first one is alpha 1 adrenergic receptor and the second one is beta 2 adrenergic receptor. जब हम अल्फा 1 को स्टिम्युलेट करते हैं देयर विल बी वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दैट विल इंक्रीज. बीटा 2 को जब हम स्टिम्युलेट करते हैं देयर विल बी वेजोडाइलेशन एंड उसके वजह से जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट विल डिक्रीज. So let's apply this particular concept in our diastolic blood pressure wala chart. Adrenaline can work on alpha 1 adrenergic receptor as well as it can work on beta 2 adrenergic receptor. Alpha 1 को जब हम stimulate करते हैं there will be vasoconstriction and beta 2 को जब हम stimulate करते हैं there will be vasodilation. तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. सो जो नेट इफेक्ट होगा देयर विल बी नो इंक्रीज और डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसलिए यहाँ पे नो इफेक्ट लिखा है. नाउ हियर वी आर कंसिडरिंग नॉर्मल डोज ऑफ एड्रेनालिन वेयर अवर एड्रेनालिन कैन स्टिम्युलेट बोथ अल्फा 1 as well as beta 2 adrenergic receptor. Moving on to noradrenaline. Noradrenaline by working on alpha 1 adrenergic receptor can produce vasoconstriction and vasoconstriction से जो diastolic blood pressure है that will increase. So यहाँ पे there will be upward arrows. Isoprenaline can work on beta 2 adrenergic receptor and beta 2 adrenergic receptor को जब हम stimulate करते हैं there will be vasodilation and because of that vasodilation जो diastolic blood pressure है that will decrease. So यहाँ पे we see a downward arrows. Now moving on to our next segment, that is the effect of all these three drugs on our heart rate. Now जब हम heart rate की बात करते हैं we need to focus on two main components. The very first one is a direct action of these drugs and the second one is indirect actions of all these three drugs. So first let's focus on our direct action of these drugs on our heart rate. Once again heart rate की बात हो रही है, यानी कि हार्ट पे we have a beta 1 adrenergic receptor. So इन तीनों में से जो भी ड्रग की beta 1 adrenergic receptor action होगी those drugs will increase our heart rate. Our adrenaline is having beta 1 action. So यहाँ पे जो heart rate है that will increase. So here we can see an upward arrow. Noradrenaline के पास भी beta 1 action है. So it will increase our heart rate. So यहाँ पे once again we see an upward arrow. Isoprenaline is also having beta 1 action and it will increase our heart rate and once again we see an upward arrow. Now जब हम indirect effect की बात करते हैं और we can say reflex action की बात करते हैं we need to understand this particular phenomenon very nicely. Now हमारी body increase in blood pressure या फिर decrease in blood pressure को resist करती है, यानी कि our body wants us to maintain our blood pressure on a particular range. So अगर ज़्यादा blood pressure बढ़ता है our body tries to bring down that blood pressure and अगर हमारे body में blood pressure कम होता है our body tries to elevate that particular blood pressure. Now जब हम blood pressure की बात करते हैं
on our blood vessel we have some kind of baroreceptors जो ये प्रेशर सेंसिंग को सेंस करते हैं. नाउ जब भी हम ब्लड वेसल की बात करते हैं we mainly focus on diastolic blood pressure and in this particular case हमारी body mean blood pressure को count करती है. If you see the formula of mean blood pressure वहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट है इट इज ऑफ diastolic blood pressure. So we can safely assume that our body is sensing diastolic blood pressure. Now look, अगर diastolic blood pressure increase होगा, this increase in diastolic blood pressure will be sensed by our baroreceptor and ये जो baroreceptor है it will send some signal to our central nervous system to reduce the blood pressure. Now हमारे CNS के पास रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए एक सिस्टम होता है and that is known as parasympathetic nervous system and in that parasympathetic nervous system acetylcholine is released and ये जो acetylcholine है on our human heart we have M2 receptor. ये एसिटाइलकोलिन M2 रिसेप्टर पे काम करेगा एंड इट विल रिड्यूस अवर हार्ट रेट. सो जस्ट सिंपली रिमेंबर कि अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हार्ट रेट कम होगी एंड अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हुआ our body once again will send signal to our central nervous system and our central nervous system will once again activate sympathetic nervous system. एंड हमें पता है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज होती है. सो यू कैन सी कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो हो रही है. नाउ लेट्स अप्लाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मेकिंग दिस पर्टिकुलर इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑन अवर ह्यूमन हार्ट. एड्रेनालिन का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट है? इट इज हैविंग नो इफेक्ट. So reflex action will not be seen या फिर negligible होगा. So hence we are writing no effect. Noradrenaline diastolic blood pressure को बढ़ाता है. As you can see कि यहाँ पे अगर diastolic blood pressure बढ़ा तो heart rate decrease होगी. So यहाँ पे reflex action में we see two downward arrows. Isoprenaline का diastolic blood pressure पे क्या इफेक्ट है? It reduces our diastolic blood pressure and as you can see अगर diastolic blood pressure कम हुआ हमारा जो heart rate है वो increase होगा. So you can see here increase in heart rate यानी कि we see two important upward arrows. Now जो net effect होगा that will be the summation of direct action and indirect action or we can also say it as reflex action. So as you can see कि यहाँ पे एक upward arrow है and there is no effect. So जो net effect होगा there will be one upward arrow. Noradrenaline में we have two downward arrow and one up arrow. So जो net effect होगा that will be one downward arrow. Isoprenaline में we have all upward arrow. So जो net effect होगा that will be three upward arrows and this particular table is very important whenever we are discussing the chapter of drugs acting on autonomic nervous system. Now इसी टेबल पे बेस्ड हम कुछ MCQ क्वेश्चंस देखते हैं. Let's see which of the following agents reduces the heart rate. Our option number 1 is adrenaline. So let's see in our table एड्रेनालिन हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट कर रहा है एंड जब भी हम इफेक्ट डिस्कस करते हैं वी आर मेनली कंसिडरिंग द नेट इफेक्ट. सो एड्रेनालिन हार्ट रेट को बढ़ा रहा है बट इन अवर क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड अ एजेंट व्हिच रिड्यूसेस द हार्ट रेट. सो एड्रेनालिन इज नॉट अवर ऑप्शन. सेकंड आइसोप्रेनालिन. आइसोप्रेनालिन का हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट है? यहाँ पे 3 upward arrows है. That simply means कि isoprenaline is increasing our heart rate. So option B यहाँ पे eliminate हो जाता है
ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज नॉरएड्रेनालिन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉरएड्रेनालिन ऑन अवर हार्ट रेट? एज यू कैन सी यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो है एंड हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स reduces the heart rate, and our answer is noradrenaline. So as you can see कि ये टेबल बनाना एंड याद करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इस पर्टिकुलर टेबल से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। Now let's see one more question which is related to our table. Which of the following has more effect on the heart rate? यानी कि कौन सा ऐसा ड्रग है which tries to maximally increase our heart rate? So as you can see, isoprenaline के पास 3 upward arrows है, so isoprenaline is our correct answer. So यहाँ पे option C is correct. Moving on to our next question. Dale's vasomotor re-reversal is due to blocking of which of the following receptor? Now ये particular question discuss करने से पहले we need to understand what do we mean by Dale's vasomotor re-reversal. So let's discuss this particular concept first. हमने देखा था कि ये जो Dale's vasomotor reversal का जो concept होता है that is a purely adrenaline वाला concept. Now जब हम adrenaline high dose में देते हैं, it first acts on alpha 1 adrenergic receptor, or we can say in high dose alpha 1 की जो activity होती है that overpowers the beta 2 adrenergic receptor की activity. So adrenaline जब हम high dose में देते हैं, first it will increase the blood pressure and जैसे जैसे कुछ टाइम बीतता चला जाएगा our adrenaline का जो concentration है वो कम हो जाएगा and in a low dose our beta 2 adrenergic receptor overpowers and beta 2 के वजह से there will be decrease in the blood pressure and ये particular response को हम लोग बोलते हैं biphasic response. Now अगर हमने एक particular patient को अल्फा ब्लॉकर दिया and अल्फा ब्लॉकर देने के बाद we give that patient adrenaline, तो क्या होगा? As you can see, there will be reduction in the blood pressure. Why? क्योंकि अल्फा को हमने ब्लॉक कर दिया. So जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, that is a beta 2 adrenergic receptor. So we see only fall in blood pressure. This particular phenomenon is known as Dale's vasomotor reversal. Now what do we mean by Dale's vasomotor re-reversal? Re-reversal में क्या होता है? We give a beta blocker and beta blocker देने के बाद we give that particular subject adrenaline. So क्या होगा? बीटा को हमने ब्लॉक कर दिया, so जो adrenaline हम लोग देंगे it cannot work on our beta 2 adrenergic receptor. So जो रिसेप्टर बच जाता है that is alpha 1 adrenergic receptor. एंड हमें पता है जब हम अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करते हैं वी सी अ हाई राइज इन आवर ब्लड प्रेशर एंड दिस इज नोन एज Dale's vasomotor re-reversal. So in this particular question हमें Dale's vasomotor re-reversal पूछा है कि ये पर्टिकुलर फेनोमेना किसकी ब्लॉकिंग के वजह से होता है. सो अभी हम लोग ने देखा इट इज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ beta adrenergic receptor. So our option B will be correct. In shock, dopamine is used at the following dose. Our options are less than 1 to 2 microgram per kg per minute. Option B is 1 to 2 microgram per kg per minute. Option C is 2 to 10 microgram per kg per minute. And our option D is greater than 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट. सो हमने जब शॉक का बेसिक डिस्कस किया था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि शॉक में जो मेन प्रॉब्लम होती है दैट इज रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर.
सो अगर हमको ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, वी नीड टू स्टिम्युलेट अवर अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, उससे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. एंड ऑल्सो अगर हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, वी नीड टू स्टिम्युलेट अवर बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर. नाउ ये जो डोपामिन होता है, it can have its alpha 1 action when it is given in the dose more than 10 microgram per kg per minute. So यहाँ पे हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है. That means we need our alpha 1 action and we need beta 1 adrenergic receptor action. So यहाँ पे the correct option would be greater than 10 microgram per kg per minute. बिकॉज अगर हमने ये पर्टिकुलर डोज में डोपामिन दिया, इट कैन स्टिम्युलेट अवर अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड ऑल्सो इट कैन स्टिम्युलेट अवर बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड इट कैन बी यूज्ड इन केसेस ऑफ शॉक. नाउ ये जो डोपामिन है हम दे तो सकते हैं, बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है विच कैन डायरेक्टली वर्क ऑन अवर अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर. सो डोपामिन हम दे तो सकते हैं, बट वी यूजुअली गिव मोर सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट. बट रिमेंबर, डोपामिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक along with oligouria. So that's it for today's video lecture. If you find value in my content, please subscribe to my YouTube channel and press that bell icon. Like this video and share it with your friends. See you in the next video. Till then, see ya, bye bye, have a good day.